हेलो एवरीवन। पूर्व वीडियो रे लॉज ऑफ कंजर्वेशन रो एप्लीकेशन सब सरथिला। तो वर्तमान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम रो प्रॉब्लम करिवा। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम होजी ए कार ऑफ मास 1000 kg traveling at a speed 32 meter per second and dashes in the rear of a truck of mass 8000 kg moving with velocity 4 meter per second in the same direction. After collision, the car bounces with a velocity of 8 meter per second. Now find out the value. What is the velocity of truck after the impact? तो गोटे कार 1000 kg मास जार 32 मीटर पर सेकेंड स्पीड रे जाउची से गोटे रियर ऑफ ट्रक पछपटू को माड कर देछि जो ट्रक रो मास होची 8000 kg जे कि जाउथला 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से गोटे डायरेक्शन जाउची। सॉल्यूशन तो एटा सपोज कार एटा होची ट्रक ये जाउची केते रे हमर 32 मीटर पर सेकेंड रे ये जाउची 4 मीटर पर सेकेंड जे द्वारा स्पीड अधिक वेलोसिटी अधिक अछि तो ये ताकू कोलेक्ट आर मास होची 1000 kg आर मास होची 8000 kg। तो ये जिते बेले जाइछि आकु ते कोलाइड करछि जे द्वारा स्पीड अधिक तो कोलाइड कर साला परे कॉलिजन परे ये कौन करछि कॉलिजन हेछि कॉलिजन हला परे कारटा कौन करछि बाउंस करछि पछकु आछि 8 मीटर पर सेकेंड रे। तो तापर देखा ट्रक और वेलोसिटी कुआड़ जो आगे को जीवो ना पछकु जीवो ना रही जीवो तो आर वेलोसिटी बाहर करिया। हमने एटी कोन हला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अनुसार लिनियर मोमेंटम अनुसार बाहर लिखिबो m1 आर m1 होची एटी कार रो m1 1000 kg m2 हला ट्रक रो वस्तुत्व मास होची 8000 kg कार वेलोसिटी u1 32 मीटर पर सेकेंड ट्रक होची 4 मीटर पर सेकेंड। गोटे लिखा फास्ट लेट m1 is equal to mass of car is equal to 1000 kg, m2 is equal to mass of truck is equal to 8000 kg। तापर u1 velocity initial ना लिखो velocity of car before collision u2 is equal to velocity of truck before collision। आउ कौन लिखा v1 is equal to velocity of car after collision v2 velocity of truck after collision। तो गिवन दैट तो कौन कौन देछि देखो m1 होची 1000 kg m2 8000 kg u1 velocity of car before collision के 32 u2 velocity of truck 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा v1
आफ्टर कॉलिजन कार आसते बाउंस करछि 8 मीटर पर सेकेंड तो -8 मीटर सेकेंड जेहेतु पछकू रिटर्न करछि v2 बाहर करिया जनरली सिंपल बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum कौन पाया m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 ओके दिस इम्प्लाइज दैट वैल्यू पुट करो कंजर्वेशन बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू कंजर्वेशन आफ्टर कॉलिजन तो m1 केते मगे दियो मास ऑफ कार 1000 kg इंटू u1 हूँ 32 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 है मास ऑफ ट्रक 8000 kg इंटू u2 है 4 मीटर एपट करिया देखो m1 u1 प्लस m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 this implies that m1 कहले केते मास ऑफ कार 1000 इंटू u1 हूँ 32 प्लस m2 है 8000 इंटू 4 मीटर पर सेकेंड m1 कहले सेमती 1000 इंटू v1 कहले -8 मीटर पर सेकेंड रिबाउंड करछि m2 है 8000 इंटू v2 बर्तमान कर सॉल्व कर 32 एटा इज 32000 प्लस 32000 इज इक्वल टू -8000 प्लस 8000 v2 ये हमारे 64000 प्लस 8000 इज इक्वल टू 8000 v2 ये 72000 बाई 8000 इज इक्वल टू v2 तो आसब v2 इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड ताले कौन कर ट्रकटा आफ्टर कॉलिजन 9 मीटर पर सेकेंड रे जीव हेन्स the velocity of truck 9 meter per second after collision. Okay, this is the problem answer ची चलो जी नेक्स्ट प्रॉब्लम को आ गोटे प्रॉब्लम करिया तापर हम टॉपिक ऊपर जीवा प्रॉब्लम टू कौन देख लिखि दउजी ए 30 kg सेल कौन करुच्ची ना इज फ्लाइंग उड़ुची कोटी केते स्पीड रे ना एट 48 मीटर पर सेकेंड 48 मीटर पर सेकेंड ओके तापर देखिए तापर कौन चीज एक्सप्लोड कर दिया जी व्हेन इट एक्सप्लोड ये एक्सप्लोड कर जाए कौन है यार दीटा पार्ट तो इट्स वन पार्ट जार मास हूँ 18 kg ये कौन कर पड़ जाए स्टॉप हो जाए रही जाए व्हाइल जोटि की द रिमेनिंग पार्ट
remaining part flies, remaining part टी उड़ी flies on। तो बाहर करिया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लेटर रिमेनिंग पार्ट रो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लेटर। तो सेलटा कौन कर फ्लाइंग कर 48 मीटर पर सेकेंड रे तो से एक्सप्लोड कर देछि। तो गोटे पार्ट कौन कर जार मास अच्छे 18 kg से स्टॉप हो जाए मान तार फाइनाल वेलोसिटी 0 हो जाए व्हाइल जोटी रिमेनिंग पार्ट से किंतु फ्लाए कर तो सेटा केते वेलोसिटी रे फ्लाए कर किछि नै मु डायरेक्ट लिखुछि सॉल्यूशन देख दीटा पार्ट गोटे पार्ट रो मास हियर लेट m1 is equal to कौन लिखा मास ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल m2 is equal to mass of second part of cell u1 is equal to velocity of first part u2 is equal to before explode u2 is equal to velocity of second part before explode v1 is equal to velocity of first part after explode v2 is equal to velocity of second part after explode पके दुआ नाउ गिवन दैट सब लिखी दे कौन कौन देछि m1 m2 u1 u2 v1 v2 पके दियो m1 कहले कौन मास ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल फर्स्ट पार्ट रो मास केते 18 kg सेकंड पार्ट रो मास केते सेकेंड पार्ट मास केते देख सेकेंड पार्ट मास केते टोटाल देख 30 kg सेल्टर मास हो 30 kg तो यदि फास्ट पार्ट मास 18 kg है सेकेंड पार्ट मास केते हबो 30 माइनस 8 18 तो आसीबा हमर केते 12 kg ओके u1 फास्ट पार्ट रो स्पीड केते जाउथला देख 30 kg सेल इज फ्लाइंग 48 मीटर पर सेकेंड तमें ता सहित दुईटा पार्ट हो जाते सेलटा जाऊँगी 48 मीटर पर सेकेंड माने फास्ट पार्ट रोचे के 48 मीटर पर सेकेंड सेकेंड पार्ट भी जाऊँगी 48 मीटर पर सेकेंड ओके तापर v1 फास्ट पार्ट एक्सप्लोड पर फास्ट पार्ट केते जाऊँगी स्टॉप हो जाऊँगी स्टॉप माने 0 v2 बाहर करवा गोटे सिंबल दे दूची m1 है 18 kg m2 12 kg u1 48 u2 48 v1 0 v2 देखा by conservation of momentum m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 तो बर्तमान मूल्य सब पकेबा m1 केते 18 18 into u1 केते 48
प्लस m2 केते 12 u2 केते 48 इज इक्वल टू m1 केते 18 v1 होची 0 m2 केते 12 v2 होची v2 बाहर करबा तो देखो दिस इंप्लाइज दैट केन बाहर करे डेटा करे 18 अच्छी 18 कॉमन नहीं जाओ सॉरी 48 कॉमन नहीं जाओ 18 प्लस 12 इज इक्वल टू एटा तो 0 हो जाओ 12 v2 तो एटा जो 48 इंटू 30 इज इक्वल टू 12 v2 तो v2 आसी जो हमर केते ना 48 इंटू 30 बाय 12 ओके ताकू कटाकटी कले 6 2 जा 12 6 5 जा 30 24 तो इज इक्वल टू 120 मीटर पर सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर प्रॉब्लम दीटा होगला तो आम बर्तमान जा नेक्स्ट टॉपिक को जीवा इक्विलिब्रियम ऑफ concurrent forces the next chapter जीवा next topic हमर जो next topic equilibrium of concurrent equilibrium of concurrent forces देखो equilibrium of concurrent forces कौन सपोज एटा गोटे बॉडी ए बॉडी ऊपर कौन से गोटे पॉइंट ऊपर जदि अनेक फोर्स सब एक्ट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज concurrent forces गोटे बॉडी ऊपर सबूक बहुत गुड़े फोर्स एक्ट करेंगे F1 F2 F3 तर यहाँ F4 बहुत गुड़े फोर्स लार्ज नंबर ऑफ फोर्स एक्ट करेंगे एट ए सेम पॉइंट ऑफ ए बॉडी गोटे बॉडी गोटे पॉइंट रे यदि लार्ज नंबर ऑफ फोर्स एक्ट करेंगे सेते बेले आम कह से फोर्स गुड़ा सब concurrent forces एक बिंदुगामी फोर्स गोटे बिंदु रे सब जगह फोर्स एक्ट कर concurrent forces अच्छा इक्विलिब्रियम केते बेले हबो ना जेते बेले सब फोर्स नेट फोर्स होजी 0 तापर कौन सी नेट फोर्स एक्ट करने ऑल फोर्सेस आर सेम मैग्नीट्यूड तो सब फोर्स रो मैग्नीट्यूड जेते बेले समान हबो सेते बेले कहबा से बॉडीटी इक्विलिब्रियम कंडीशन रे अछि किंतु से गोटे पॉइंट ऊपर जिते सब फोर्स ऐड करेंगे से गुड़ी हूँ concurrent forces कहती जो से concurrent फोर्स सब फोर्स नेट फोर्स से बॉडी ऊपर 0 हुए तो सब concurrent फोर्स मैग्नीट्यूड सेम हुए ताहले हम कह सेटा होची कोन इक्विलिब्रियम कंडीशन अछि से बॉडीटा ओके तापर लिखिबा ताले कोन करिया when number of forces act on a body when number of forces act on a body when number of forces act on a body could at a same point and the net force को force unbalanced force net unbalanced force is 0 तो at that time सही समय कौन हम जनरल इंग्लिश at that time the body will remain at rest
कौन करियो कंटिन्यू in its state of rest or uniform motion along a straight line, and it is said to be in equilibrium. Okay, is said to be equilibrium. ताले आमे डेरिवेशन करिया देखिया गोटे पॉइंट ऊपर जिते कनकरेंट फोर्स एक्ट करुची तो बाहर करिबा डेरिवेशन डेरिवेशन कौन करिया सिम्पल लिखिया सपोज फास्ट वर्ड देखिए सपोज एटा गोटे होची पॉइंट ओके पॉइंट हो ओ तो ये फोर्स गोटे एक्ट करुची F1 आ गोटे फोर्स एड एक्ट करुची F2 ओके आ गोटे फोर्स एड एक्ट कर धर F3 ओके तो लिखिबा let us consider three forces let's consider three forces name दे दियो F1 F2 and F3 acting at a same point तना हो O acting at a same point O of a body okay अच्छा मत देखो बॉडी तो मोर पैरेललोग्राम लॉ फैक्टर तो वर्तमान को F1 F2 फोर्स एडिशन टा केते हबो तो तार रिजल्टेंट हबो रिजल्टेंट केते हबो तो डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम तो आकु जदि हम गोटे पैरेललोग्राम करिबा आकु जदि गोटे पैरेललोग्राम करिया तार डायगोनल टा एटा हबो तो रिजल्टेंट that means F1 plus F2 तो लिखिबा बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखो एटा हला तार रिजल्टेंट तो ये जति फोर्स तापर दउची ये जति फोर्स दउची यदि ए फोर्स रिजल्टेंट केते फोर्स दउची मिसिले F1 plus F2 कोडा एटा यदि एटा और एटा ठीक अपोजिट यदि F3 रो फोर्स आसे तो सेम हे जाए ताहले हम कहया ता ऊपर नेट फोर्स होची 0 कारण दी जण जाक एतिक टाणुछन सपोज गोटे वस्तु ये टाणुची 10 न्यूटन रे ये टाणुची 5 न्यूटन रे तो एपडू आउ जने टाणुची सपोज ये जति मन कर 10 न्यूटन टाणुची तले बोटटा कोडे जीवो ये 15 न्यूटन हे गला तांकर याडे पडला ये जति मन कर 15 न्यूटन टाणिबो तले कोन हबो तो सेम रहबो कोड जीवन तले हमको इक्विलिब्रियम किंतु प्रकृत 15 न्यूटन ले याडे आसीबो काहे कि ना येटा 10 ये सीधा रे दिजण जाक 15 न्यूटन टाणते ताले तो ये 10 न्यूटन टाणुची ये 5 न्यूटन टाणुची ताले तांका नेट फोर्सटा केते हबो 10 5 15 हबन तारे डायगोनलटा जति की हबो यदि सेति फोर्स एपडू टणा जाए ताले कोन हबो इक्विलिब्रियम कंडीशन हबो पॉइंट क्वाड जीवरबा आपरे नेट फोर्स 0 अपोजिट डायरेक्शन हबो तो से लिखिया कोन लिखिया बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन by parallelogram law of vector addition okay resultant of F1 and F2 केता हबो is equal to F1 plus F2
तो यहाँ है रिजल्टांट यहाँ है F1 प्लस F2 तो ये कौन अच्छी केतटा इक्विलिब्रियम कंडीशन हम ओटा जतबे F1 प्लस F2 इज इक्वाल टू F3 हुए इफ देखा ये इफ थर्ड फोर्स कोटा ना F3 acts on a body such that केमती एक्ट करिवो जति F3 is equal to F1 plus F2 हुए किंतु नेगेटिव डायरेक्शन रे ये जदि यार F1 प्लस F2 ला ये सेपटू को दब ताले रहिबो कि ये एपटू नेगेटिव डायरेक्शन माने माइनस then the body will be in equilibrium. That means कौन कला हमर F3 is equal to minus F1 plus F2 this simple F3 is equal to minus F1 minus F2 that means लिखी दे आपको आंसर सब F1 plus F2 plus F3 is equal to 0 the net force 0 hence the condition for equilibrium of number of forces कौन कोठी एक्ट करती एक्टिंग at a same point of a body कौन हम is the vector कौन कले sum of all concurrent forces vector sum of all concurrent forces भी हम all forces is 0 ओके तो ये है वेक्टर इक्विलिब्रियम इन कनकरेंट फोर्सेस तो एबे जिबा हमें फ्रिक्शन ऊपर को जिबा ओके तो बर्तमान जिबा फ्रिक्शन ऊपर को जिबा नेक्स्ट टॉपिक होची फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन कौन फ्रिक्शन मनक जिते बेले गोटे सरफेस आ गोटे सरफेस रे थाए आइदर मोशन अवस्था था रेस्ट अवस्था था सेते बेले तापर फ्रिक्शन ए फोर्स जो कंटाक्टस जो गोटे बॉडी आ गोटे सरफेस ऊपर गोटे बॉडी आ गोटे बॉडीर सरफेस ऊपर जिते बेले रहे मोशन करूँ रेस्ट अवस्था था तो जो कंटाक्ट जगह तो से कंटाक्ट जगार एक फ्रिक्शन फोर्स काम करे बा अप्लाइड फोर्स अपोजिट दिगरे सेटा एक्ट करे तो सेटा लिखिबा कौन लिखिबा ना व्हेन ए बॉडी धर ये दिगरे अप्लाइड फोर्स करा होची व्हेन ए बॉडी moves over the surface of another body तो सही समय कौन करे
a force acts कोठी parallel to आ सहित ये एक्ट अप्लाइड फोर्स है आमर आ सहित पैरेलल करके तार अपोज डायरेक्शन गोटे एक्ट करे पैरेलल टू कोटे द सरफेस ऑफ कांटेक्ट एंड आउ कौन करे ना अपोज करे अपोज कौन करे ता मोशन टाको रिलेटिव मोशन दिस opposing force is called friction तो जिते बेले वस्तु गोटे आ गोटे सरफेस उपरे मोशन करुए तो सेते बेले कौन हुए ना से वस्तु रो विपरीत दिगरे एठी गोटे कांटेक्ट जगह रे एठी गोटे फोर्स आकु अपोज करे तो से अपोज फोर्सटा हूँ फ्रिक्शन जानी थो सपोज गोटे खद खदटा रास्ता थी खाल टीप रास्ता थी गोटे साइकिल मारिकी पेडालटा मारिकी छाड़ीदेव जी बाट जीव गोटे पिचु रास्ता थी अधिक बाट जीव तो एका फोर्स थे कि ये कम बाट गला ये अधिक बाट गला कहीं ना यार जो कंटाक्ट जगार सरफेस ऑफ कंटाक्ट जगार फ्रिक्शन फोर्सटा अधिक रोचे पछकू तार अपोज कर मोशन को से अपोज कर तो से अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन तो ये फ्रिक्शन रे पढ़िया तीन प्रकार फ्रिक्शन पढ़िया गोटे पढ़िया स्टैटिक फ्रिक्शन आ गोटे पढ़िया लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गोटे पढ़िया काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन को लिखिदेव एफएस काइनेटिक फ्रिक्शन होची एफ के लिमिटिंग फ्रिक्शन होची एफएस मैक्सिमम ओके हम फास्ट जीवा स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर को देख रेडन स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सपोज यहाँ गोटे बॉडी अच्छी गोटे सरफेस उपर जाऊँ सरफेस उपर थी तो एपटे सपोज आमर अप्लाइड फोर्स मानकर सपोज पी एक्ट कराऊँच तो सपोज एक्ट कले यहाँ वस्तुटा जाऊनी बट न्यूटन मन 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो बट यहाँ जाऊनी तो जीवा कथा जाऊनी कौन पाई तो कंटाक्ट जगह जड़े फोर्स या अपोज करुच्ची तो जिते बढ़ी बढ़ी चलुव सी मत से अपोज कर 10 न्यूटन पकड़े गलानी 15 न्यूटन पकड़े गलानी तो 20 न्यूटन है तो से ये कौन है मोशन करने को आरंभ कला तो से स्टैटिक फ्रिक्शनटा कमीगला जो आसो काइनेटिक फ्रिक्शन अर्थात तो बॉडी जो रेस्ट अवस्था थी तो आम अप्लाइड फोर्स दबा द्वारा जब बॉडी रेस्ट रहा मोशन कला ना तो से जो फ्रिक्शन कंटाक्ट जगह जो फ्रिक्शन एक्ट करे तो कहती स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने जिते तुम्हें फोर्स अप्लाई करते कि वस्तुटा रेस्ट थी जाऊ न तो लिखा स्टैटिक फ्रिक्शन तो ये गोटे फोर्स the force of friction by the frictional force भी कही परिबो which acts क्या मतलब एक्ट कर फ्रिक्शन फोर्स सदा बेले दीटा सरफेस रो कांटेक्ट जगह एक्ट करे which acts between two bodies तो before one body
actually starts moving over the other is called static କେତେବେଳେ ଆଡ୍ କରୁଛି ବିଫୋର୍ ୱାନ୍ ବଡି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ମୁଭିଂ ଓଭର ଦ ଅଦର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ବା ମୁଭିଂ କରୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଫୋର୍ ମୁଭିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରେଷ୍ଟ ଥିବ ତ ମୁଭିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଫୋର୍ସ ଆଡ୍ କରୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ static friction. It is denoted by Fs static friction बोली लिखा जाए। अच्छा तापर देखिए अच्छा देखा आपको आम अप्लाइड फोर्स देले अप्लाइड फोर्स चली किंतु वस्तुटा मुविंग करनी मुविंग करने पूर्वर बिफोर मुविंग तो यहाँ कहते आमर एफ स्टैटिक फ्रिक्शन तो जिते मुविंग कर स्टार्ट कर जस्ट स्टार्ट तो सेते बेले जो फ्रिक्शनटा हुए स्टैटिक फ्रिक्शन एंड हो जाए स्टैटिक फ्रिक्शन से लिमिट सीमा अतिक्रम कर से आरंभ हम काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन जो एंड हुए तो एंड जगह कहती आमर लिमिटिंग फ्रिक्शन अर्थात जोटी स्टैटिक फ्रिक्शनटा मैक्सिमम है स्टैटिक फ्रिक्शन से एंड है मैक्सिमम से स्टैटिक सब लास्ट मैक्सिमम तो दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन तो लिखा स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम अर्थात एफएस मैक्सिमम केतले हम ना व्हेन ए बॉडी जस्ट स्टार्ट्स मूविंग जिते स्टार्ट मूविंग करिवो स्टार्टिंग करिवो तो सेते बेले होउची तार स्टैटिक फ्रिक्शनटा मैक्सिमम हबो कोठी ना ओवर the surface of another body तो जिते बड़े जस्ट स्टार्ट करिवो सेते बड़े या कहंती हमरो लिमिटिंग फ्रिक्शन तापर जीवा हमें काइनेटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन अच्छा काइनेटिक फ्रिक्शन कौन देख यहाँ बॉडी आपको यहाँ गोटे सरफेस उपर जाऊँगी आम अप्लाइड फोर्स सपोज पी देले मूविंग करिया पूर्वर आदर थिला स्टैटिक फ्रिक्शन जस्ट जो स्टार्ट करिवो सेतले आसला लिमिटिंग फ्रिक्शन माने जिते स्टैटिक फ्रिक्शनटा मैक्सिमम रोची जो मूविंग कला बेले मध्य गोटे फोर्स अपोज करुची दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन तो लिखा सो राइट डाउन डेफिनेशन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which the force of friction which acts कोटी which acts when a body कौन करे is in state of motion मोशन अवस्था रे थिबो कोठी ना ओवर द सरफेस ऑफ another body तो फ्रिक्शन फोर्स सदा बेले गोटे बॉडी जेतले
आउ गोटे बॉडीर सरफेस उपर जाऊँगी से कंटाक्ट जगार ही फ्रिक्शन फोर्सटा एक्ट करे सब अनदर बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। It is denoted by FK। अच्छा अच्छा कहल व्हेन भाव एफ बा पी धर अप्लाई फोर्स व्हेन अप्लाइड फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ के धर पी एफ पी इज इक्वल टू एफ के हुए देन the velocity the body moves with p नो एफ टा यदि फ्रिक्शनल फोर्सटा काइनेटिक फ्रिक्शन सहित समान हो जाए द बॉडी मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी गोटे कांस्टेंट वेलोसिटी रे जाए। अच्छा बर्तमान तार ग्राफ देखिए सपोज ए दिगरे आमर अप्लाइड फोर्स दिया होची ए दिगर सपोज फ्रिक्शनल फोर्स दिया होची ओके। तो बर्तमान देख अप्लाइड फोर्स बढ़ी बढ़ी चलती फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ी बढ़ी चलती जेपर्यंत वस्तुटी आ गोटे सरफेस उपरे मूव करने पूर्व से स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स दिया ये बढ़ जिते फोर्स दिया ये से अनुसार टाणुची जी फोर्स एपट टाणुला जिते आम बढ़ाऊे सी जमा जाऊनी ताने सी स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ी बढ़ी जाऊँगी ये 1 2 3 4 1 2 5 जिते फोर्स बढ़ाऊे से फोर्स बढ़ुची बढ़ी बढ़ी चले केमी ग्राफ तो ये आसला स्टैटिक फ्रिक्शन जिते बॉडी स्टार्ट कर जो फोर्स बढ़ला बेलू स्टैटिक फ्रिक्शन से कमिजी एमती आसपर धीरे धीरे अप्लाइड फोर्स बढ़िले फ्रिक्शनल फोर्स कमी कमी जीव ये जिते बढ़ी बढ़ी जीव ये तलू तल आसो तो यू एतक रहा आमर एफ एस आठी एफ एसटा मैक्सिमम हम यू जस्ट स्टार्ट टू मूव कमिला यू आसला एफ के एटा काइनेटिक फ्रिक्शन ये जाए अप्लाइड फोर्स बढ़िला फ्रिक्शनल फोर्स बढ़िला जदि स्टैटिक फ्रिक्शन जेपर्यंत वस्तुटी गति करू ना से ये बढ़ले से बढ़ला चलला तापर एटू जस्ट स्टार्ट टू मूव अप्लाइड फोर्स बढ़ला ए फोर्स फ्रिक्शन फोर्स धीरे धीरे कमी कमी आसला तो एमती चलला एटा हमरो काइनेटिक फ्रिक्शन ओके। एटा ताले कोन लिखिया वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विथ अप्लाइड फोर्स ग्राफटा हो कहार दिस graph shows the variation of force of friction with applied force okay। तापर जब हमें लॉज ऑफ फ्रिक्शन लॉज ऑफ फ्रिक्शन तो लॉज ऑफ कहार पड़िया ना लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन करवा और लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन रो पड़िया। तो फास्ट लॉ हला लिमिटिंग फ्रिक्शन पड़े लॉ मन रख लिमिटिंग फ्रिक्शंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ कांटेक्ट कौन लिमिटिंग फ्रिक्शन बा एफएस मैक्सिमम डिनोट करे डिपेंड्स ऑन
the nature of the surface, nature of the surface in contact. कंटाक्ट सरफेस नेचर उपर डिपेंड करे लिमिटिंग फ्रिक्शन केते जदि कंटाक्ट बहुत चिकन थाए स्मूथ थाए पॉलिश थाए तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से अनुसार बहुत कमी जाए थाए। ओके 2 नंबर आ कौन ना लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट केमती करे। लिमिटिंग फ्रिक्शन acts tangential to the two surface in contact and direction opposite to the direction of motion of the body। ये केमिति act करे ना tangential। so write down limiting friction acts tangential tangential to the two surface in contact and direction opposite to the direction of the motion of the body। direction कौन opposite to the direction of motion of body, motion of the body। third law होची कौन ना the limiting friction is directly proportional to the normal reaction। नहीं तो याडा दी अप्लाइड फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन जदि एपट है एफएस मैक्सिमम तो ये नॉर्मल रिएक्शन सहित डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन जिते अधिक हम लिमिटिंग फ्रिक्शन से अधिक हम नॉर्मल रिएक्शन जिते कम हम लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हम से लिखिदबा द लिमिटिंग फ्रिक्शन is directly proportional to normal reaction R ने between two surface। that means Fs maximum is directly proportional to R। अच्छा this implies that proportional चिन्ह उठे आम गोटे constant term दबा is equal to mu R। okay here mu is equal to कहती coefficient of friction, coefficient of static friction, coefficient of static friction। अच्छा बाहर कर coefficient of friction केते जे तो एटा static friction विषय करछे तो एटा s नै जा तो एटा कोन लिखिया mu s is equal to केते हबो fs by r एन कोन लिखिया सो coefficient of static friction is defined as ratio, the ratio of limiting friction and normal reaction। limiting friction and normal reaction। ओके जे तापरे
ये गला लिमिटिंग फ्रिक्शन तापर एबे जो आमे काइनेटिक फ्रिक्शन लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पर तार पुन तीनटा पॉइंट करिया काइनेटिक फ्रिक्शन सेम तार तीनटा पॉइंट लिखा केन लिखा तो काइनेटिक फ्रिक्शन is independent of the area of contact लिखिए is independent of the area of contact limiting friction area पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है independent of area of contact so long as सही पर्यंत करिबा so long as the normal reaction remain the same the normal reaction remain the same जे पर्यंत देख एटा सरफेस या गला लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर स्टैटिक फ्रिक्शन एटा नॉर्मल जे पर्यंत नॉर्मल रिएक्शन आउ लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन सेम न होइछि जे पर्यंत थिबो से पर्यंत ये काइनेटिक मोशन करि परिबनी जेतले मोशन कला से पर्यंत ये नॉर्मल रिएक्शन आ ये सेम हैला नाही ओके ये कमी गला तो सेते बेले ये इंडिपेंडेंट करबनी आ जे पर्यंत नॉर्मल रिएक्शन ऐसे सेम अछि से पर्यंत काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करिवो नहीं ओके तो आर सेकंड पॉइंट होची तो काइनेटिक फ्रिक्शन डजंट डिपेंड ऑन वेलोसिटी प्रोवाइडेड द वेलोसिटी इज नाइदर टू लार्ज और टू स्मॉल ये वेलोसिटी ऊपर डिपेंड करबनी आइदर वेलोसिटी लार्ज हो बा स्मॉल हो के बॉडीटा तले मोशन करूची हम लिखबा द काइनेटिक फ्रिक्शन Fk okay doesn't depend on velocity provided the velocity is neither too large nor too small थर्ड पॉइंट लिखा सेमती द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बी नॉर्मल रिएक्शन ये मध्य नॉर्मल रिएक्शन ऊपर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल चलन सृष्टि करुच्ची काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ले नॉर्मल रिएक्शन बढ़िबो काइनेटिक फ्रिक्शन कमिले नॉर्मल रिएक्शन कमिबो द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन is directly proportional to normal reaction between two surfaces that means Fk direct proportional to R this implies that Fk is equal to mu it has your k R where mu k is equal to proportionality constant and mu k is equal to coefficient of kinetic friction mu k is called coefficient of kinetic friction अच्छा दिस इम्प्लाई दैट अच्छा म्यू के मूल्य बाहर करो कैलकुलेट करो तो म्यू के इज इक्वल टू एफ के बाई आर तो कही पारिया कौन हियर coefficient of kinetic friction is the ratio
coefficient of kinetic friction is the ratio between kinetic friction and normal reaction. ओके तो यहाँ है आमर नॉर्मल काइनेट लॉज ऑफ फ्रिक्शन सरला तापर एट लिखिबो एज अच्छा कहले कोटा बड़ एफ के बड़ ना एफ एस मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन बड़ कोटा बड़ फ्रिक्शन टा कोटा बड़ एटा सदा बेले लेस दैन काइनेटिक फ्रिक्शन जो काइनेटिक फ्रिक्शन टा लेस दैन हैला बोली तो एटा मोशन करछि ना दिस इम्प्लाई दैट एफ के कोन म्यू के आर always less than mu s r is simply that mu k is less than mu s सब बेले coefficient of kinetic friction is less than coefficient of static friction hence coefficient of kinetic friction is less than coefficient of static friction ता सहित लॉज ऑफ फ्रिक्शन सरला तमें नेक्स्ट वीडियो रे जिबा एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज ओके तापर किसी प्रॉब्लम तापर चैप्टर एंड करिबा।